ब्लॉग ख़ातीन हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आप सब अपना ये वीक बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है बदलता जा रहा है। इवन दो करंटली द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट एंड इट्स ब्यूटीफुल, बट वी आर इक्वली स्केयर्ड अबाउट द स्कॉचिंग हॉट वेदर दैट इज़ अबाउट टू कम। और इसी वजह से लास्ट वीक मैंने सोचा क्यों ना मैं स्वात विज़िट करूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड दैट लास्ट डोज ऑफ फ्रीजिंग हॉट, फ्रीजिंग नॉट हॉट, फ्रीजिंग कोल्ड वेदर। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम लोग ये जो वेदर है इसको एंजॉय करें। आई वोंट से सब बिकॉज आई नो सम ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, वो लोग शायद समर्स को भी एंजॉय करते होंगे, बट आई जस्ट नेवर गेट दिस कि क्यों बंदा इतना स्वेटी, इतना हॉट से वेदर को किस तरह एंजॉय करते हैं। दैट्स जस्ट सो नॉट मी। बट आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट कि ये जो आखिरी दिन है विंटर्स के, प्लीज़ उसको खूब एंजॉय करें, एंजॉय टू द फुलेस्ट। और अगर हो सके तो ट्रैवल करें, ट्रैवल टू द नॉर्थ, एंजॉय सम नाइस कोल्ड वेदर एज वेल। और आजकल पता नहीं क्यों इन जनरल मुझे बहुत शौक हुआ है ट्रैवलिंग का। आई डोंट नो, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट समटाइम्स यू जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल द chaos, from all the the hectic schedule that we have, from all the workload that we have, and we want to escape and just enjoy a beautiful view and enjoy the peacefulness that is in the mountains. So that is just how I am. और इसीलिए मैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग प्लान्स बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे सवालात भी आते हैं कि रिदा आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, आप कैसे हर दूसरे हफ्ते जो है ट्रैवल कर रही हैं और कभी क्या कर रही हैं कभी क्या। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि I've just realized at this point of my life कि काम तो होता है, चलता रहेगा और उसको हम मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ख्याल रखना, बिकॉज ट्रैवलिंग डेफिनेटली हेल्प्स यू विद दैट। और आपकी जो इंटरनल पीस होता है, आपकी कंटेंटमेंट होता है ऑफ हार्ट, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो डू व्हाट यू लाइक टू डू, एंड इफ आई लाइक ट्रैवलिंग आई एम डेफिनेटली गोना डू दैट एज लॉन्ग एज आई हैव द टाइम एंड एज लॉन्ग एज आई कैन टेक आउट द टाइम। तो बात सिर्फ यही है कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। साथ साथ ये बताती चलूँ कि हम लोग आज एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे मौजूद हैं, विच इज़ लोकांटा रेस्टोरेंट, जो कि यूनिवर्सिटी टाउन में मौजूद है। यहाँ का एसेंस बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना पीना इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो डू चेक दैट आउट। और अब चलते हैं हमारे आज के जो दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रश्मीना खटक, जो कि बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन है, एंड शी इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ मीनाज डिलाइट विच इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, एंड वील कम टू दैट। और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नूर, जो कि फाउंडर है इवेंटिवेटिव की, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं रश्मीना खटक की तरफ, जो कि आई एम पर्सनली सो इंस्पायर्ड फ्रॉम, इन्होंने मुझे बताया कि इनकी अपनी शी इज़ मैरिड, शी हैज़ अ फैमिली ऑफ हर ओन, इनकी एक बेटी है 1.5 years की, and then she is a dental surgeon as well, and then handling such a successful business on your own. I think that's huge. तो इस जर्नी के बारे में तो आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले इनके काम के ऊपर थोड़ा सा एक पैकेज देख लेते हैं, एक छोटा सा। अपनी जर्नी के बारे में बताएं। I'm sure people are so excited to get to know how you are managing all of this together. Yeah, I'll definitely share it with you guys. So, okay, it started like 10-11 years back. I don't even have a track of the time because it's been ages now. So, I guess I was in first year BDS. That was 2011. Yeah, it traced back to 2011. So, we were young students bhi the, and we were really, me and my sister Rashmina, we both started it. So, we really were into baking and cooking, and that fancy cooking, fancy cakes. We loved, doing such things. So it started when we were checking these, Lahore and Karachi ke, those elites and all that, and seeing their parties and everything, and they used to have those fancy cakes and fancy confectionery. So that used to, obviously we would want it for ourselves, but we would be intrigued to know कि यार बनता कैसे है. So we were little kids, इतना कुछ आता नहीं था. We were medical students. My sister is MBBS and I'm BDS. So we really were like, कि चलो देखते हैं बनता के. Then we used to ask those pages वाले. We were innocent. We didn't know people don't share these things. So we would message them innocently कि can you please help us with this thing, and if we can know how do you. अब हमें क्या पता था कि लोग people don't share it. These like that's the rule. They don't. So we would be disappointed. ये भी नहीं बता रही, वो भी नहीं. There are obviously I won't name them, but big names. And फिर what we did was कि चलो why not YouTube was there, Google was there, so we took help of that, and then we
started making it at our home at little parties, you know, taking it to KCD and you know class fellows को खुश कर दो, friends की birthdays हैं. Then somebody suggested कि रश्मीना पेशावर में उस वक्त कोई भी नहीं था and everybody who's watching, you know, they would know कि पेशावर में 10-11 years back कुछ भी नहीं था. We were the first one who introduced such things and people give a good response in a sense कि they were also, everybody likes fancy things, so why not cakes? हाँ ना, bling bling and everything. So we weren't even that good at it. Like it's the love of people of Peshawar seriously that they used to order those things from us. मतलब वो, if we look back at them now, तो वो बहुत ही you know amateur and obviously वो startup था. तो then ये plan बना. Then my friends Dr. Samra Fakhr, she is my biggest support. तो वो एक ही रात में she made a page and नाम भी she selected कि जी मीनाज है, पश्मीना and रश्मीना, so we'll go for a मीनाज. Nice. Yeah, so she went for a मीनाज delight. So when I woke up I told my mom that Ami, we made such a thing and obviously we were excited. So she literally like वो होते ना घर में तंग करते कि माना तुम लोग से कौन ऑर्डर किया, why would somebody order it from you guys. So खैर it started and then after a week I guess we got the order of 6 cupcakes. I still remember that customer. I remember her so well. She ordered 6 cupcakes and we started from a very minimal cost. You know वो बिल्कुल वो जो ना होने के बराबर ना एक हो, तरीके बस से। we were जी। like क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि costing होती कैसे है. How do we manage the Idea भी costing नहीं and था। everything. So we started it from there and then slowly, obviously I was in KCD, तो KCD KMC का हमारा एक ही बैच होता था. We used to have classes, तो वो kind of it's a huge batch, 300 students जो थे वो KMC के थे हमारे. तो it spread like a wildfire just from there and my sister was in Jinnah College at that time. तो उस टाइम बहुत ये बात हो गई कि जी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं and they're doing something from their home and उस वक्त ये चीज़ कॉमन थी नहीं. आई रिमेंबर 1-2 डिज़ाइनर्स थी हमारे पास, दे रियली गुड वंस अभी भी हैं, नबीला फरीदी और इन टाइप के जो थी नेम्स थी उस वक्त लाइक, लेकिन बहुत कम थी. यही 1-2 लोग थे जो करते थे एंड वी वर काइंड ऑफ वो भी था लोग दे डू अप्रिशिएट कि यंग लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं. It was like वो KMC, KCD के students, they started coming up with orders and then thanks to people of Peshawar and their love, so it was like you know, but it was difficult obviously. Sure it was. क्या आप लोगों ने कोई social media platform पे start किया था? Was it like an online business or? Yeah, we started it from Facebook. It was a Facebook page that it started and you know friends sharing and my friends were a great support. You know, sharing it on their walls and telling people and especially my class fellows in KCD, KMC, they used to you know appreciate and share among. So did you start getting a lot of orders jaldi se ya nahi? Obviously that's not possible. It takes time. 1 order per week and then 2 order per week and obviously we were excited. बच्चे थे, खुश थे and then financial independency तो वैसे भी you know it's exhilarating. Everybody want that. Young age में हमें आ गई थी. But I think that's brilliant and you know, we'd like to hear more about that as well from you, Rashmina. I definitely share. There are so many stories, so many things, so many ups, come to so that. many downs. So coming to you, Ayesha now. Ayesha भी student हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही इवेंटिवेटिव आपने स्टार्ट किया और वक्त के साथ हम सब जानते ही हैं कि आजकल ये जो मुख्तलिफ इवेंट्स लोग करा रहे हैं, चाहे वो ब्राइडल शावर्स हैं, बर्थडेज़ हैं, ये तमाम चीज़ें कराई जा रही हैं. तो ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने का शौक़ सब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इट्स समथिंग दैट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम. तो आयशा से हम इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके काम पे एक पैकेज देख लेते हैं. तो आयशा आप बताएं कि आपके पास ये मोटिवेशन कैसे आई कि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी स्टार्ट करनी है? First of all, thank you so much for having me on your show. It's my pleasure. I'm really happy to be here with you guys, Meena and you. Thank you. It's a pleasure. And I'm doing BS in Sociology from Peshawar University. मैं बचपन से ही मेरे अंदर बहुत क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स थे ना. मैं हर चीज़ में क्रिएटिव साइड देखती थी. उसमें मैं कहती थी बस हर चीज़ में कलर्स हो, क्रिएटिविटी हो ना, किसी तरह भी हो. तो मैंने कॉलेज होम इकोनॉमिक्स से मैंने पढ़ा ना.
मेरा उसके बाद प्लान ये था कि मैं NCA जाऊंगी, लेकिन मेरे कोई पर्सनल इश्यूज़ थे, उसकी वजह से मेरा ये ड्रीम भी रह गया। अच्छा। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि आप ये होता है ना कि आप एक प्रॉपर प्लान बना लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्ट करना होता है कि मैं जी कॉलेज यहाँ से करूँगी, फिर मैंने वहाँ जाना है। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो रह जाता है ना कि यार मेरा ख्वाब था और वो रह गए। तो मैं काफ़ी अपसेट थी इसको लेके ना। फिर मेरे फादर ने और मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे अंदर ये है तो तुम क्यों नहीं करती। तुम अगर मेरा ये था ना कि मैं NCA जाऊंगी और पेशावर में कोई भी आर्ट गैलरी नहीं है ना, वहाँ से मैं आके मैं यहाँ अपनी आर्ट गैलरी खोलूँगी। तो ये मेरा एक छोटा सा ख्वाब था जो छोटा ही रह गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। इवन प्लानिंग तो मैं अपने घर में अपने फैमिली के सारे फंक्शंस करती थी, लेकिन इस तरह प्रोफेशनल लेवल पे मैं नहीं आई थी। फिर मेरे बाबा ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरी बहन ने कहा बस मैंने तुम्हारा पेज बना दिया, दैट्स इट। और ये कब किया था? हाउ लॉन्ग अगो वाज दिस? आई गेस 1.5 ईयर हो गए। हाँ। लेकिन काफ़ी इस छोटे से टाइम पीरियड में ना मैंने काफ़ी अच्छा लोगों को अपने ऊपर मैंने ट्रस्ट काफ़ी गेन कर लिया। लोग अब बहुत मुझे प्यार मिलता है सबसे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, हम दोनों मिल के काम करते हैं ना, मलिहा एंड मी, हम दोनों का मिल के है। तो मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस भी आया। आपको पता है हमारी सोसाइटी का यहाँ के बिल्कुल, इनिशियली इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। जी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया। आप मतलब कोई देखे तो वो कहेगा कि इट इज़ वेरी इजी, पेज बना लिया एंड बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन इट वाज नॉट दैट मच इजी। मैंने काफ़ी आई हैव लॉस्ट सो मैनी रिलेशंस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनको यही था, उनको मेरे काम से ऑब्जेक्शन थी एंड ऑल दैट। तो उनका ये था कि मतलब ये काम छोड़ देना। तो मुझे लगता है कि उनकी जो क्रिटिसिज्म थी ना, उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया है, इसलिए मैं आज आपके सामने मोटिवेशन। यस, एग्जैक्टली। मैंने उस मोटिवेशन को उस क्रिटिसिज्म को मैंने एक पॉजिटिव वे में लिया। आयशा, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब स्पेशली एज फीमेल्स इन द सोसाइटी, हम लोग मतलब आप लोग इतने इंडिपेंडेंट हो, such things at such young age, so I guess that's an achievement. It is such a big achievement, you know, especially when you take all that for your rights and stand up for your wants, stand up for your, you know, what you want to do. And I guess every girl should do that. एक यही पॉइंट था ना मेरी लाइफ में। मैं इस डिलेमा में आ गई थी कि यार मैं ये इवेंट प्लानिंग छोड़ दूं, क्या ये इतना गलत काम है कि मतलब इतनी ऑब्जेक्शन हो रही है, इतना क्रिटिसिज्म मुझे आ रहा है। तो आई वाज वेरी अपसेट। मैं सही काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि इवेंट प्लानिंग से किसी को क्या wrong with that? असल में बात ये है ना कि हमारे ये कल्चर आ गए कि अब एंटरप्रेन्योर्स आ गई हैं सारे बिजनेस, लेकिन कहीं ना लोगों में वो थिंकिंग अभी भी है कि क्यों इंडिपेंडेंट है काम। मतलब लड़की अगर कोई कुछ करने लगेगी तो पता नहीं उनको क्यों लगता है कि यार हम लोग उनको चैलेंज करने आ गए हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस फियर इन देम। तो मैंने जब मैं इस डिलेमा में थी कि क्या करूं, तो मेरे बाबा मेरे पास आए। ही इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट, माई बाबा एंड माई ममा एंड माई सिस्टर। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी ये फैमिली तुम्हारे पीछे आज बात करी है ना, तो यही फैमिली कल तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। तुम्हारे साथ मेरा सपोर्ट है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कोई तुम्हें कुछ भी बात करे ना तो मैं उसको हैंडल करूँगा। तुम बस अपना जो कर सकती हो ना करो। तुम अपना स्टडी, अगर तुम्हारा दिल से तुम नहीं चाहती कि तुम इवेंट प्लानिंग नहीं करना चाहती तो छोड़ दो, मैं तुम्हें इस पे भी प्रेशराइज नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल है और तुम लोगों की वजह से इसको ख़त्म करना चाह रही हो तो डोंट गो फॉर दैट। तो इट वाज ऑल माय जर्नी। दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट दैट यू वेंट थ्रू। इट वाज वेरी डिफिकल्ट स्टेज। मेरा ये था कि मेरी फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरी कॉलेज की, मेरी स्कूल की, मेरी यूनिवर्सिटी की। माशाल्लाह से इतना उनकी तरफ से मुझे ज़रूरत होती है। इस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मेरी फ्रेंड्स माशाल्लाह से, मैं उनको जितना बोलूँ ना वो मेरे लिए कम है कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड to have them in my life. That is great. तो जब आपने स्टार्ट किया आयशा, पहला प्रोजेक्ट कब मिला? मतलब स्टार्ट करने के बाद आपने पेज बनाया था फेसबुक पे? पेज बनाया था तो उससे पहले मेरा काम इतना प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो ज़ाहिर है मेरे पास ना वो स्टैंड पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ था ना, ठीक है, पिक्चर्स भी इतनी खास नहीं थी। तो वो आप पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, क्योंकि वो व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करती हैं। तो मेरे पास उस तरह की पिक्चर्स नहीं थी कि यार मैं पोस्ट करूं और मुझे ऑर्डर्स आएँ और मैं करूं।
तो मुझे यही वो था ना कि मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया था, पीछे से मुझे क्रिटिसिज्म भी आ रही थी। इवन लोगों ने मुझे इतना बोला कि यार तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ तक चली जाओगी। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ और देख लो मुझे। हम आते हैं रश्मीना की तरफ। रश्मीना, आप जो है बेकिंग वगैरह करती हैं और आप टेल मी अबाउट द स्पेशलिटी, मीना's डिलाइट की स्पेशलिटी क्या है? Acha, Meena's Delights, like I told you, it started like Ayesha said, since my childhood it intrigued me. You know, people used to not make fun, but कहते थे कि रश्मीना घर में भी तैयार होके घूमती है. She's always dressed up, dolled up. Because that's my interest. I used to put on makeup, jewelry, ये सारा. तो one of my mamu, elder mami used to call me jewelry ना, पूरी jewelry box है, सारा बचपन से ना, bangles भी डाले हुए हैं. You know, that's like शौक था, everything fancy. Then at even my home, I still do like, you know, fancy dinners, fancy cooking. You know, my brothers and you know they. Were you always like a perfectionist? You do it, yeah, exactly. You want to do it for pictures. I'm like, एक काम मैं परफेक्शन से करूँ, पिक्चर तो मैं लूँगी, I'll definitely post it on social media ना. वो कहते हैं हाँ ये इसलिए तुम ख्वारी करी हो क्योंकि तुम पिक्चर. But that's why like you know even my mom she always tell me कि बचपन से you know dressing भी on point करनी है, हर एक चीज़ you know. तो from that I'm just saying it, relating it कि वो जैसे Aisha said कि I always want to do something creative, bling bling, something that's attractive. I love attractive cakes. Even now when I make them, I still make sure कि मेरी birthday पे attractive cake or something that standouts, right? You know, everything. I want everything. That is what you can find in local bakeries. Yeah, so exactly, that's the point. So my speciality is that thing, something that's bling bling, special, you know, according to your theme, something customized according to your wants, you know. So you make anything if someone shows you a picture, आप कुछ भी बना लेती हैं, they're customized. It can never be 100%. I always tell my customers कि the thing you share from Pinterest or something, Google, तो वो तो मैं नहीं कर सकती, but I'll make sure कि जितना मुझसे बन सके. And alhamdulillah, people do trust me with that. Initially cake है तो उसकी recipe बनाना, did you do that yourself? Is it your own personal recipe? Yes, the present ones I use, they're all mix and match because initially obviously we take help from somewhere. So I started it from Google, YouTube, like obviously it's a long journey, mix and match. Ingredients. Exactly. A lot of people tell me na, we followed the recipe, लेकिन वो आपकी तरह taste नहीं था. And I'm like, obviously वो नहीं हो सकता because we know that thing ना, बंद आँखों पे भी mix and match and we know how to, you know, do that thing. अच्छा अक्सर मैं classes भी देती थी when people request I used to arrange classes जब vacations, yeah, kind of workshops, right? तो वहाँ जो students होते थे, they used to be like, Rashmina, munga cakes like our cakes don't taste the way. I was like, it's exactly same recipe, but the thing is कि it's gonna take time. Exactly, it's gonna take time to come the like you. Even though I used to share my own tips, tricks, I used to arrange the classes. मैं उनसे कह देती थी कि देखें ये तो आपको Google पे भी मिल रही हैं. Try to learn the tips and tricks from me कि जो मैं कर रही हूँ. That's the main thing. तो Rashmina, we'll come to this. हम लोग continue करेंगे बातचीत, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, तो हम चलते हैं एक ब्रेक पे. रश्मीना, आपसे बातचीत हो रही थी जो आपके मैजिक इंग्रेडिएंट्स हैं और ये केक जो है और ये जो रेसिपी आपने बिल्डअप की हुई है. बट व्हाट रियली फैसिनेट्स मी इज कि ठीक है केक का टेस्ट भी अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छा है, बट द आर्ट दैट इज डन ऑन इट, मतलब वो जो आप लोग किस तरह वो सब कुछ क्रिएट करते हो उस केक को, तो ये आर्टिस्ट्री कौन करता है? That's what I do. My sister Rashmina. Now we are married. It was a long journey. We got married. We have kids now. I have a daughter and she have got 2 kids. Mashallah. But the thing is that we have to. I was doing my MCPS from KCD, and at the same time I was doing my MPH from KMU, and then I was married, and then I had Meena's Delight, a full-fledged business. So it was difficult managing. उसमें फिर ये था कि we divided the work. It was always my mom from the start, and we have a one trained person who is there from the start. Or helpers हैं, but this is that main team we have, like 2 sisters, mother and my helper. I'll name him so that you guys know. It's called Gul Nazir, right? Perfect. So he's our right hand, like he managed. So the decor part, that's mainly on me or my mom. Like we don't trust anybody with that, obviously. That's the
something that that's a very needs perfection. delicate- That's a delicate thing, you know, that needs perfection. A lot of people ask me, why don't I hire और आपके someone? कस्टमर्स के अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो आप लोग को मीट करने होते हैं. You know, there are customers who actually ask me कि नहीं ये रश्मीना ने ही बनाना है, ये पश्मीना ने भी नहीं बनाया. You know, it's all about trust. You know, होता है, we work together, but एक होता है ना कि customers होते हैं, there are friends who specify, and I don't mind it. It's not something bad, क्योंकि हर एक बंदे का एक हाथ, एक काम है, अपना काम होता है. लेकिन आप लोग की रेसिपी भी सेम है, लेकिन आप लोग की टेस्ट आप बनाए, आपकी मदर बनाए, वो टेस्ट वेरी करता है, सेम नहीं होता. Okay, होता है. I don't know, but maybe या होता है ना, हाथ का होता है ना, हाथ की बात होती है But ना. then आयशा एंड रश्मीना, कोरोना के दौरान जो इतना बड़ा ब्रेक हुआ था, तो किस तरह हाउ डिड दैट अफेक्ट योर बिजनेस आयशा? इफ यू कोरोना के जब हुआ तो ये हमारे पास बहुत अच्छा चांस था. आई गेस आप मुझसे रिलेट कर पाए, लेकिन आपका तो खैर आपका चल गया था बिजनेस. मेरी स्टार्टअप था. तो जब कोरोना का टाइम आया तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. तो ये सीन था कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई, सारे होम बेस्ड इवेंट स्टार्ट हो गए ना. तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि हमें लोग कांटेक्ट करने लगे. दूसरा ये कि मैंने इसी दौरान बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस भी की. गज़ाला के साथ मैंने कोलैब किया था, जिससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया था. और उसके बाद लोगों को मेरा काम भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था. लोगों ने कहा कि यार यू आर डूइंग सो मच ग्रेट. तो पेंडेमिक के दौरान ये नहीं हुआ कि इवेंट्स तो बहुत कम हो गए थे? इवेंट्स कम हो गए थे, कम इन द सेंस इस तरह हो गए थे, वो होम बेस्ड हो गए थे. तो लोगों को इस तरह पता नहीं चलता था कि इवेंट्स हो रहे थे, लिमिटेड होते थे, छोटे होते थे, तो होम बेस्ड होते थे. तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यार अभी हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि यार हम one can do best from a small thing, you know, when you start up, so it's best if you start from a small thing. तो ज़्यादा अच्छा आ जाता है ना. या छोटा सा स्टार्टअप उसको ग्रो करते हुए देखना, आई थिंक उसकी भी एक खुशी मिलती है कि स्टार्ट में किस तरह था और अब जैसे कि आपने कहा कि स्टार्ट में आप लोग जिस तरह के बनाते थे, तो अब आप लोग अब हंसते भी होंगे पिक्चर्स देख के हमने क्या किया. We didn't have that tools, that requirements, हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये काम होता कैसे है, which tools do you need, you know, there are tons of tools for that. इसी तरह हम भी अपने पहले इवेंट्स को देखें ना तो मुझे हंसी आती है यार, सीरियसली है मैंने किया. Yeah, they've come a long way. I love their work. Like seriously. तो आयशा, आप लोग प्राइसिंग किस तरह करते हो? मुझे ये नहीं समझ आती कि एट टाइम्स अगर हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पे प्राइसिंग की जाती है, किस तरह आप यू नो? अच्छा, हम जब मार्केट में आए ना तो हमें कोई आइडिया नहीं था. जिस तरह रश्मीना ने बात की, तो हमने जब फर्स्ट इवेंट किया ना तो हम लोग बस उनको हमने कुछ भी बोल दिया ना कि यार हम आपको इसमें ही कर देंगे ना. तो फिर जब हमने फर्स्ट इवेंट किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, प्राइसिंग करनी चाहिए हमें एक चीज़ की ना. तो उसके बाद हमने ये सोचा ना, हमने सब जितने भी इवेंट प्लानर्स थे उनका देखा, तो उन्होंने सबने क्या किया हुआ था कि अपने सर्टन पैकेजेस रखे हुए थे. ठीक है, तो मैंने सोचा कि अगर हम भी पैकेज रख दें तो वो तो एक वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस है. तो लेकिन मिनिमम कितने पे स्टार्ट होता है आप लोग का? हम लोग का मिनिमल रेंज जो है ना 15,000 से स्टार्ट होती है. लेकिन पेशावर की मार्केट इज़ वेरी टफ. I can relate. यहाँ पे लोगों का आई डोंट नो क्या इनका परसेप्शन होता है, लेकिन लोग हमें कहते हैं कि हमें डेकोर भी A1 चाहिए. हाँ, and they want to pay the least possible price. I mean, they'll pay for everything. They'll pay for makeup. You know, I mean, that's a huge art. I appreciate that. But I'm just talking about the payment, right? Exactly. They'll pay a makeup artist 10K for a party makeup. But they won't like जैसे आयशा का काम है, it's all hand work, right? My work is all hand work. बिल्कुल हाथ का मजदूरों जैसा काम है. I call it मजदूरों वाला काम. Literally from scratch you have to make. And अगर एक काम पे if I spend 2 days over it, they won't like to pay 5K for that. उनको 5K भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा. Even though it's art work, both of them. चाहे वो मेकअप है, चाहे जो भी है, आर्ट वर्क तो आर्ट वर्क ही होती है, वो भी हाथ का काम है. I'm just saying about ये ना कि वो ये काम करते हैं ना. I totally relate to her. You know, they really work hard for it. और दूसरा लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारी गेस्ट लिमिट कम है, तो आप इतनी ज़्यादा क्यों बोल रही हैं? तो आपकी गेस्ट लिमिट जितनी भी हो, चाहे आप एक बंदे के लिए भी कर रहे हो, तो हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी देंगे, हम सारा सेटअप लेके ही आएंगे, आपको प्रोवाइड उसी तरह. तो आउट स्टेशन काम किया, पेशावर के बाहर काम किया आपने अभी? आउट स्टेशन भी मसला यही है कि मुझे इस्लामाबाद की भी लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया, लेकिन उनका ये होता था
कि इस्लामाबाद में भी काफ़ी अच्छे इवेंट प्लानर्स हैं। जी जी जी। उनका ये होता था कि वो मुझे कांटेक्ट करके कहते थे कि मुझे मिनिमल रेंज में चाहिए, तो मिनिमल रेंज में मैं इस्लामाबाद में मैं ट्रैवल करके भी जाऊँ, ट्रैवल Yeah. कॉस्ट आपकी अलग लगे। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं उनको ट्रैवल कॉस्ट का करती थी, तो वो फिर कहते थे कि आप ट्रैवल कॉस्ट इतनी ज़्यादा ले रही हो तो हम तो आपसे नहीं करवाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करें, क्योंकि आप उनसे क्लाइंट्स को इस तरह डायरेक्ट कुछ कह भी नहीं सकते ना, क्लाइंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। But you know, you have to make certain, I would call it rules. I don't know what exactly do we call that. But एक वो बना देना, that एक professional होता है. I've seen it. I've dealt with certain people, and then my siblings used to tell me कि देखो ये बंदा stern तो नहीं कह सकते, but there are certain fixed वो, they don't move from that. And we were very rigid flexible. हम about- थोड़ा हाँ, they were rigid. So they used to tell me rigid, Negotiation is and very I am important. bad at being rigid. I am bad at being rigid. Like मुझसे नहीं होता. And I guess in professional dealings you have to be. तो हम maybe you're in a startup. She's very young. She's in a startup. तो I haven't learned it till now how to be rigid and how to have certain set of rules. So eventually, I guess she will. But I can totally relate to her. You know, it's the same बिल्कुल, thing, the मैं same समझ सकती हूँ। struggles. You know, dealings. Exactly. So personally, what is your personal favorite flavor, or you know? I love. What would you recommend? cheesecakes. What I would you love recommend कि लोग मीना Cadbury and fudge. You know, Cadbury fudge is the most अच्छा, loved. fudge. जो बंदा आ जाए तो Cadbury. really amazing. That's like a mixture of Cadbury frosting and a fudge frosting. So that's really a rich one, gooey one, and I personally I should love try that. it. I should try it. I would Now love coming to to make it orders, for you. coming Yeah. to किस तरह बुकिंग कराई जाती है, आप दोनों से सवाल है कि कितने अरसे पहले करानी चाहिए, आपसे करा रहे हैं, आपसे ऑर्डर ले रहे हैं, और कितना टाइम लगता है for the The preparation? earlier the better, because Okay. to be honest, like it's not an outlet or it's not a registered something like कोई bakery है ना. अब वहाँ तो आप they have got a team, right? हमारा तो limited team है. All of us are working. My sister, she is doing training in her radiology. I am posted in Cohort, so as a dental surgeon, so I have to run there. I have to go to university Exactly. for my thesis. So you know, it's like we have to manage everything. But what about So emergency according to the- orders? Yeah, we do definitely take it from our sweetest customers, जो कि regular customers who comes to us and trust us with everything. So we do manage something for. It's like a family kind of thing. कि हम family के लिए, a family or friend asks me for something, so I'll definitely manage anything for them. Wonderful. So, but normally it's better if it's a week before. A week earlier? You know, Okay. earlier the better. बंदा डिस्कस भी अच्छी तरीके से करते हैं, हाँ, वो plan मिस्टेक्स भी। की वो भी कम हो जाती हैं. You know, possibility. You know, you are made sure of everything. हर एक चीज़ का बंदे को पता चल जाता है. बिल्कुल, So I guess same goes for Ayesha. The earlier the Exactly. better. हमारा भी यही होता है कि हम क्लाइंट्स को हमेशा यही कहते हैं कि आप प्लीज़ एटलीस्ट 2 या 3 वीक्स पहले तो बताएं ना, लेकिन पता नहीं वो फिर भी नहीं करते। अब It's always end minute. हमेशा end minute पे होता है। एंड मिनट पे उनको तो क्या वो चाहिए कोई होता पिक्चर है, वगैरह आपको दिखाते हैं कि आयशा पिक्चर मुझे नहीं, इस तरह या थीम बता देते हैं, और फिर मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा अपना माइंड का बताएं कि आपके माइंड में है कि किस क्या तरह आप का setup। expect क्या कर जी, रहे हैं हमसे। तो आप एक्सपेक्ट क्या करें, तो हम उसके अकॉर्डिंग। और हमारा दूसरा ये होता है ना कि हम अब बजट उन्होंने अभी हमें अब तक बता दिया ना कि हमें इतना, फॉर एग्जांपल उनका 10,000 बजट है ना, तो हम अपना उसमें 10,000 में फुल बेस्ट देते हैं, और उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ़ भी होता है। अच्छा। आपको फ़ोटो बूथ मिल जाता है या एक्स्ट्रा डेकोर मिल जाता है, हैंगिंग्स मिल जाती हैं, तो हमने ये अपने बिजनेस में रखा हुआ है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रश्मीना सॉरी, Yeah. आई वांटेड टू आस्क यू कि आप लोग अपनी केक की प्राइसिंग किस बेसिस पे करते हैं? It's based on ingredient cost, right? Okay. Like I'll divide it into 2 parts: ingredient cost and the work. You know, time and work. We call it time. हम like in my हर एक का अपना वो होता है ना, मैं उसको time and वो कहती हूँ, work कहती हूँ. जितना मेरा time and hard work लगेगा. If the thing is way too, normally pricing starts from 1,500 per pound. Per pound cost में ये होता है कि we have to check the fondant, we have to check the you know the basic ingredients, and then the frostings, and then I use high end, like I clearly tell it, and I tell everyone, because people say नहीं, I won't name the bakeries, but ये जो local bakeries जी, हैं, इनके तो इतने हैं 400 per pound. Like that's a commercial thing, and we all know commercial level पे the things are And then not there's a the huge big way difference as well. exactly feel जैसे होता हम है। घर में करते हैं, a homemade meal and a homemade cake is completely different, and I'm sure every one of you can
relate to that कि हम कितनी different costing करते हैं. तो it's not in commercial level, it's on a very small level. So we do it from 1500 per pounds. And if the design is complicated, like एक चीज़ है वो उस पे time भी लग रहा है, उस पे effort भी लग रहा है, उस पे ज़्यादा fondant work लग रहा है, so that obviously adds up to the cost. We have different paints, like these days the gold paint is very in. So that gold color, it's a small box of color and that's cost like 800 to 1000. I'm not sure about क्योंकि वो total bill आ जाता है. I never thought about the single price, but it is like that. तो अगर एक केक पे वो लग रहा है, and if I tell a customer that your cake costs 4500 for the basic cake and I'm adding, so that's like, whoo, ये कैसे ज़्यादा हो गया? I mean, I'm using that whole thing for you. So that's how we do the costing. I never include it in the ऐसे जो एक दो चीज़ें होती हैं जो they are बिल्कुल expensive, right? So I don't add it to the cake cost. Then I do tell the customer कि I mean अब इस चीज़ में there are Hershey chocolates being used or Lindt or anything. Then I do tell them that you know the market price. These are the market prices. We are adding it to the cake price. तो इसी तरह होते हैं ना add-ons का. Just remember that we also got 2 really huge cakes made from you. Really? A couple of years ago from my nephews, it was a Mickey Mouse and a Minnie Mouse cake. There were 2 really huge cakes. I'll show you the picture after this. Sure. अभी याद है मैंने. But we make so many cakes. I know. I'm sure आप लोग कितने बनाते होगे और. रिदा आपने कॉस्ट की बात की थी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. हम लोग तो अभी नए नए बिजनेस मार्केट में आए हैं, तो हमारा ये होता है ना कि हम लोगों ने कुछ इवेंट्स नहीं एक्सपीरियंस किए होते, एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, तो हमें समझ नहीं आती कि उसकी कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करें, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो पहले से कहते हैं कि आप मुझे रफ़ एस्टिमेट दे दें कि कितना आएगा. तो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि हम कोई चीज़ न्यू कर रहे हो ना, तो हमने कैलकुलेट नहीं की होती और हम उनको कम बता देते हैं, तो वो फिर बाद में जब आप लोग काफ़ी रिस्क की ज़्यादा जी हमें अपने तरफ से देना पड़ता है. एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ योर इवेंट? आपको मतलब या आपको क्या पता चलता है कि अच्छा ये इवेंट हमने बहुत सक्सेसफुली बहुत परफेक्टली किया? अभी मैंने लास्ट इवेंट मैंने किया, इट वाज अ वेरी बिग इवेंट. मैंने निकाह पूरा निकाह का सेटअप था. इट वाज उसमें फ़ोटोशूट भी था, फ़ोटोशूट का एरिया, केक कटिंग का एरिया, फुल स्टेज का डेकोर. आजकल तो हर टेबल राउंड टेबल्स पे जो सेपरेट डेकोर्स होता है वो भी, वेलकम डेकोर. इट वाज वेरी बिग इवेंट और वो मेरा सबसे सक्सेसफुल इवेंट था. और दूसरा, उस इवेंट ने मुझे टाइम मैनेजमेंट काफ़ी सिखाया. उस इवेंट वाले दिन मेरा पेपर था, मैं सुबह 7 o'clock वेन्यू पे गई, मैंने वहाँ सारा जाके डेकोर किया और मुझे यही टेंशन थी कि यार मैंने जाना है, मैंने पेपर करना है, लेकिन उसमें भी यू पुल्ड इट ऑफ. आई थिंक दैट्स ह्यूज. लेकिन दूसरा, मैं सपोर्ट की मैं बार बार बात कर रही हूँ ना, तो दूसरा ये था, मैं वहाँ काम कर रही थी लेकिन मुझे पता था कि मेरी फ्रेंड्स हैं पीछे, वो मैनेज कर देंगी, वो मुझे बार बार. आपने एक टीम बनाई हुई है या नहीं? आपकी फ्रेंड्स वगैरह ही आपकी हेल्प? नहीं, टीम है हमारी, मैं और मलिहा काम करते हैं. हाँ बिल्कुल मलिहा. और बाकी अभी हम लोग अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं गए ना, तो अभी हम लोगों ने इतने वर्कर्स हायर नहीं किए, तो हम वो मैनेज कर लेते हैं. मेरे बाबा खुद मेरी इतनी हेल्प करते हैं. मेरा लास्ट इवेंट था, ही वॉज देयर बाय माई साइड. सुबह से लेके शाम तक वो खड़े हुए थे कि यार आयशा तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ, मुझे बोलो मैं कहाँ जाऊँ. अच्छा. और वो बस मेरे साथ थे ना, तो वो आपके साथ इस तरह की सपोर्ट हो ना, तो आपके माइंड से वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है कि यार मेरे बैग पे सब हैं. इट्स ओके. आयशा मोस्टली कौन से प्रोजेक्ट्स करती हैं? मतलब किस किस्म के ज़्यादा ऑफर्स आते हैं? क्या होता है वो निकाह जिस तरह आपने बताया, वो इवेंट्स होते हैं या बर्थडे इवेंट्स होते हैं? निकाह का ये था कि ये मेरा सबसे पहला बड़ा इवेंट है ना. उससे पहले मैं हर एक को कन्विंस करती थी कि यार आप लोग हमसे करवाओ, हम कर सकते हैं, लेकिन यही ट्रस्ट इशू की बात होती है, कोई आप पे इतना ट्रस्ट जल्दी नहीं कर सकता. तो अभी हमने निकाह का इवेंट किया, तो उसके बाद से हमें बड़े इवेंट्स के भी मैसेजेस आने लगे कि आप हमारा भी करें, आप हमारा भी करें. हर किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं? जी. अब ज़्यादातर पेशावर में ब्राइडल शावर्स होते हैं, बर्थडेज होती हैं, इसी टाइप के इवेंट्स होते हैं. और आप लोग की कैंसिलेशन या रिफंड पॉलिसी क्या है? कैंसिलेशन तो अभी तक फ़िलहाल हुई नहीं है. मैंने एक्सपीरियंस नहीं की अब तक. सही. एनीथिंग यूड लाइक टू ऐड अप टू दैट? एनी रिफंड पॉलिसी कि अगर कोई बुकिंग करा ले? और I mean there comes up cases where customers literally leave the cakes. I mean we work days and night on it and होता है. I mean I don't know what would be their issues. पेमेंट करते हैं वो लोग? अब I never take advance payment. हाँ अलबत्ता I'll be honest, if there's some case, I mean orders होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं with huge payments. So we definitely take 50, you know, just to be on safe side कि हम इतना मेहनत करें. It's a huge project.
So we definitely do take for that. Otherwise, normally I don't. I mean, there तो are कभी people कोई from mishaps Peshawar, I do वगैरह trust कुछ them. हुए हो होते हैं क्योंकि इतना सा छोटा सा पेशावर है. I almost know everyone. तो वही लोग आते हैं and I know them and I trust them. They trust me, I trust them. any story of mishap that you'd like to share with us? मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। yes. मैंने जब प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं किया था ना, तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छे इवेंट्स करती हो और प्लीज़ आओ मेरा इवेंट करो। तो मैंने उस इवेंट के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था और एंड मोमेंट पे उसने कहा कि मैं नहीं करवाना चाह रही एंड आई वाज लाइक सीरियसली। उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया तो मैंने फिर ये पॉलिसी रख ली थी कि हम एडवांस पेमेंट लेंगे। Yeah, you should. एडवांस इस सेंस में ना कि आप एक सिक्योरिटी होती है एग्जैक्टली And it's like artwork. You're doing so much in so many weeks. So I guess काफ़ी हार्ड वर्क होता है, ये काफ़ी हेक्टिक होता है। मतलब लोगों को नजर नहीं आता, लोग नहीं, समझते नहीं, हैं कि I स्टैंड totally रख दिया, understand you, फ्लेक्स you उस know. पे लगा दिया एंड हाँ, इट्स वेरी नहीं, इजी। it's not तो इट्स like नॉट that. लाइक दैट। तो हम अगर अपनी पॉलिसीज़ रखें भी तो वो इस सेंस में रखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम अब किसी के लिए फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं तो Yeah. उस पे उसी की चीज़ लिखी होती है, उनका नाम लिखा होता है, तो वो Yeah. मैं दूसरे इवेंट में नहीं नहीं यूटिलाइज कर utilize सकती। कर आयशा, अगर सकते हैं। आप किसी इवेंट पे जाती हो तो कितने घंटे पहले मतलब आप लोग जाते हो सेटअप करने, या एक दिन पहले, किस तरह का वो किस तरह होता है? वेन्यू ये कि वेन्यू की हम लोगों ने जाना होता है, देखना होता है कि किस तरह का है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगी क्या नहीं चाहिए होगी। विज़िट ज़रूर होता है ना, जिस दिन इवेंट हो उससे एक दिन पहले विज़िट काफ़ी ज़रूरी होता है। और फिर जिस दिन इवेंट हो तो उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम से बहुत पहले चले जाएं। इस तरह अगर दिन के टाइम इवेंट हो 12 o'clock शुरू हो तो फिर मैं 7 o'clock सुबह के टाइम चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ सब कुछ परफेक्टली हो जाए ना, Exactly. चलिए, that is great. आयशा, आपकी जैसे और भी बहुत लड़कियाँ होंगी जो कि देख रही होंगी, जिनको शायद शौक हो कि हम अपना इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एक स्टार्टअप करें, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी या क्या टिप्स देना चाहेंगी, गाइडलाइंस? क्योंकि आपके पास पर्सनली जो आपने स्टार्ट किया, आपने बताया आपके पास तो आपको पता ही नहीं था आपने क्या करना, यू वर क्लूलेस, सो हाउ वुड यू गाइड देम? अच्छा रिदा, मैंने ये नोट किया ना, पेशावर में मार्केट में अब जितने भी यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आ गई हैं, वो इतनी उनमें जेलसी फैक्टर नहीं है। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को गाइड कर रहा है। मैंने भी नोट किया। मैंने आपके लास्ट वो देखा था, प्रोग्राम देखा था, उसमें भी जो 4 फीमेल्स आई हुई थी, आर्टिस्ट आई हुई थी, वो इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी ना। हमें यही चीज़ चाहिए। और दूसरा मैं सबको यही कहूँगी कि आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, बीइंग अ गर्ल, तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। लोग आपको ना बिल्कुल डोंट गिव अप, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। क्रिटिसिज्म होती रहेगी, आपने अपने करियर्स को, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना है। किसी के कहने पे आपने स्टॉप नहीं होना। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है ना, तो you can do wonders. That's what all that matters. matters. Your friends, your family. That's such a good point. तो रश्मीना, आप क्या कहना चाहेंगी? I would have the same thing. I mean, I would tell all the girls and everyone that just you need to stand up for yourself. Whether that's personal, whether that's your personal life or anything, I would tell the girls, you don't need to be scared of society or anything. एक टाइम आ जाता है ना कि लोग चुप ही हो जाते हैं। हम कहते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं, नो डाउट कर रहे होते हैं, बट देयर कम्स अ पॉइंट कि वो भी चुप ही हो जाते हैं। कब तक बात करेंगे? रश्मीना, आपकी लाइफ में इस जर्नी के दौरान कोई ऐसा पॉइंट आया where you felt like giving up? Did you come across any point like that? जहाँ To be honest, no. Never. That's nothing amazing. could stop me. I mean, I had That's my the exams. energy you need. That's the spirit. Whether it's my wedding, whether I had my ups and downs in life. होता है हर एक बंदे के. I had worst years of my life, what moments. But you stood But strong. yeah, I had to. You cannot give up on anything just because of circumstances. It's life. It's It has life. to be आते ups and रहेंगे, downs. ups and Normally downs. be. I mean, होता है ups and downs आते हैं. That doesn't mean you give up with your life. And I guess you learn it with age. Exactly. I am aging, so I'm learning this thing that one cannot give it. And I've always heard it from my father. He always used to tell me, and I know what he's been through. He never gave up on anything. He never gave up on us. He never gave up on anything. So I guess that's what define you. Not to give up on your what you love. I used to love it. People used to tell me, oh, डॉक्टर रानी दी, ये तो डॉक्टर रानी दी ब्याम की कुने जोड़ी या हो लालच की कहीं ना, कोई लालच, पैसों की लालच में देखो स्टूडेंट्स हैं. इट वाज नॉट इवन माय फादर इनिशियली. ही वाज अपोजिंग इट बिकॉज ही वाज लाइक you should concentrate on your career. और वो he had that thing in mind कि कोई ये ना बोले कि इसकी बेटी नामी ग्रामी बंदे की बेटी है और वो केक्स बना रही है.
he didn't know, he didn't realize that thing that it was art, and once he realized that, and that was pretty quickly. So he was our biggest support. He still guides us on how to do the customer dealing. At times he tells us, I'm sure they're very proud of you you did now." wrong. He जी। tells us on our face. इस तरह डीलिंग नहीं करने होते हैं, mishaps हो जाती हैं ऊपर नीचे. So he tells us how to deal with it, and that's what I Tell guess us you about need those from mishaps. कोई I mean, it story, happens. कुछ, Customers, कोई- we don't. कस्टमर्स के उस पे नहीं उतरते. ऑब्वियसली एवरीबडी हैव देयर ओन परसेप्शंस कि उनको ऑर्डर ऐसा चाहिए होता है, नहीं होता तो हमारा भी दिल खफा होता है. आई मीन वी हैव वर्कड हार्ड ऑन दैट. एंड अब एक बंदा आपको टोटली एक चीज़ का नेगेटिव वो होता है. हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है ना. अब एक बंदा होता है आपको थोड़ा तरीके से बता देता है कि रश्मीना दिस, एंड एक बंदे को एकदम ब्लास्ट कर देते हैं ना. तो यू आर लाइक, ओ माय गॉड, आई वर्कड हार्ड ऑन इट. एंड होता है, you know, we are humans. Communication होता है, we gaps cannot आती be हैं, communication gaps. और I mean, we are humans. Everybody do make mistakes, and I always say it was our mistake because customer is always right no आप matter दोनों what को you क्या do. लगता है कि Yeah. We हमारी forget जो यूथ orders है, and everything. नौजवानों में कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए? इट्स अ मस्ट फॉर सर्वाइवल, इट्स अ मस्ट टू फॉर सक्सेस इन दिस लाइफ. कुछ भी 2-3 स्किल्स जो हमारे पास मस्ट है होनी चाहिए. हमारी पाकिस्तान में मसला ये है ना कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. जी. इट्स ट्रू, नहीं है, लेकिन हम have to. सब के अंदर स्किल्स होती Yeah. हैं. वी हैव टू एक्सप्लोर दैट. एक्सप्लोर दैट. हमने वो एक्सप्लोर करने हैं, और कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता. यहाँ लोगों की परसेप्शन ये है कि यार जिस तरह मीना है ये केक बनाती है, यार ये डॉक्टर होके केक बनाती है. हाँ, लोग why ये do you सोचते want होंगे. और मुझे लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग वही बात है, कंपटीशन बहुत है. कंपटीशन Just बहुत आगे है, वर्क लेकिन हार्ड, वर्क ऑन योर स्किल्स. एग्जैक्टली. Yeah, everybody have their own set of skills. अब now that depends on you if you want to discover them. अब आप नहीं करना चाहती, you want to stay in the bed and just say and cry कि नहीं है job. रश्मीना, That's बहुत how it बड़ा works. इशू ये होता है कि मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हम लोग डरते हैं बात करते हुए, हमें स्टेज फियर है. तो they're so scared that they don't work on it. So I tell them, face your fears. Yes, that's you the want to thing. build up that होता skill, है, you just cannot everybody sit have back that. It's home not and that we were never born with that. We all had Exactly, those we all fears went and everything. through that stage. I know, but that's the thing that you need to learn, or I guess learning comes from within. Yeah, I think Nobody you else both are can great help you. leaders. You are lucky enough if somebody is there to help you out. अगर नहीं है तो I guess आखिर में बंदा एक अपना ही होता है. जान है तो जहान है. You have to pick your own self. बिल्कुल, एटलीस्ट इतना आप केपेबल हो कि अपने आप को संभाल सको. हाँ, exactly. So nobody else is going to be there for you. I mean, parents होते हैं, your husband, your हमने family. प्रोफेशनल बातें तो बहुत सारी कर ली हाँ. रश्मीना एंड आयशा. अब थोड़ी सी ऐसे हट के बात करते हैं. कोई और हॉबीज, एनीथिंग दैट यू बोथ लाइक, ट्रैवलिंग और it could be anything, Yeah, playing traveling. sports Me and my or- husband, we're always traveling. अच्छा. हम घर में बैठती ही नहीं है. At times I tell him I'm tired. Just let's sit home. सारा दिन, and he loves traveling. We travel. We cook. He loves eating, and I love cooking, and I cook for him just out of my own love for cooking. That's lovely. So that's what I do, and like her, I love decorating, DIY. Nice, you've kept Decorating and yourself stuff, busy, pretty busy. arranging some, dinners चले अच्छा, and अपने आप को meetups आपने and stuff like that. क्रिएटिविटी और Yeah, इन चीज़ों में बिजी रखा हुआ है. What about yeah, I do. आई एम वेरी लेजी पर्सन. आप सोच रही होंगी लेजी और इवेंट प्लानिंग करती है, तो इवेंट प्लानिंग इज़ लाइक इट्स माई पैशन, इट्स माई करियर, इट्स माई हॉबी. तो वो जो आपका किसी की चीज़ की तरफ इंटरेस्ट हो, आप पैशनेट हो, तो वो आप करते हो, चाहे आप लेजी भी हो तो Yeah, आप you do अपना that. 100% देते हो. इसके अलावा बिसाइड्स दिस मेरा कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है. पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा सीखने का शौक है कि मैं वो सीखूं. मेरी छोटी सी आर्ट गैलरी हो. और काश हमारे पास और टाइम होता तो हम इस हवाले से भी बात करते. Yeah. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू बोथ, Same एंड आई एम here, श्योर Rida. माय It ऑडियंस was ने lovely. ज़रूर ये एंजॉय किया होगा. आई होप आप सब ने एक्चुअली ये एपिसोड एंजॉय किया, और अपना फीडबैक आप सब ज़रूर दीजिएगा. आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखिएगा.